अदर देन दैट एमबीए के साथ बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस हैं. यू गेट टू हैव अ वेरी प्रोफेशनल एजुकेशन. मतलब जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से छोटी छोटी चीजें नहीं करनी, सीधा अपनी एक स्टडी करनी है और डायरेक्ट मैनेजर. So getting into IIT Bombay was obviously a dream come true for any aspirant who जो भी engineering कर रहा है उनका obviously goal रहता है IITs crack करना. So I was not able to get into IIT during engineering, but then now when I got the chance to be at IIT Bombay as an MBA student, it was a great experience. ये एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, एक चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, तो उसे कैसे मैनेज करना है यार, क्योंकि लोग है ना, मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में चिल कर रहे होते हैं. Nestle. So Nestle was another great thing that happened to me. So this is one thing also IIT Bombay provides. Since IIT Bombay has that tag, good companies such as Amazon, Google, Microsoft, Nestle and all these companies, these are there. And Nestle, one being the biggest FMCG of the world, I was very grateful to be a part of Nestle. Hello everyone, hope you are doing great and staying safe. I am Mukul Kumar, an engineer at Amazon, and you're welcome to Tech with Mukul को Tier-3 Achiever series. और आज इस सीरीज के पार्ट में हम ऐसी पर्सनालिटी के साथ डिस्कशन करने वाले हैं जिन्होंने प्राइवेट Tier-3 कॉलेज से होने के बावजूद MBA में 97.07 परसेंटाइल स्कोर किया. उसके बाद में IIT बॉम्बे में इस टाइम पर वो अपनी MBA कर रही हैं और साथ ही साथ नेस्ले में इंटर्नशिप की. तो यार काफी कम लोग होते हैं जो एक Tier-3 बैकग्राउंड से होने के बाद एक Tier-1 मेंटालिटी में जाते हैं. देखते हैं कि यार क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन सारी चीजों में, कॉलेज का डिफरेंस का फील होता है उन्हें और उनकी क्या इंस्पिरेशनल जर्नी रही है. तो मैं बात कर रहा हूँ आज मेरी फ्रेंड युक्ति मोहन की. तो बिना किसी देरी के मिलते हैं युक्ति से, शुरू करते हैं डिस्कशन. Hey, hi Yukti. Firstly, let's Hi, start with the basic introduction of yours. कि यार तुम हो कौन, इस टाइम पर क्या कर रही हो और कैसे कैसे चीजें रही हैं अभी तक. Okay, sure. So, hi, my name is Yukti, and I'm currently pursuing a Master's of Business Administration from 𝐏𝐴𝐚𝐲 IIT Bombay. Prior to this, I was a student at Maharaja Surajmal Institute of Technology, where I completed my Bachelor's of Technology in Electronics and Communication Engineering. So basically, that's it about myself. I don't really have any work ex, so I've completed my entire education in one go, and yeah, that's about it. That's cool. That's cool. From Maharaja Surajmal Technology to IIT Bombay. So how does it feel to be like IIT Bombay? From like if we look from the beginning, you started from a Tier-3 college, Maharaja Surajmal, and that too with an electronics background. और अब यार वहाँ से डायरेक्टली IIT Bombay, तो कैसा फील हो रहा है इस टाइम पर? So it's like an absolutely completely different experience, different set of people, different set of opportunities. So basically all the people who belong to Tier-3 colleges, they know the challenges that we face over there. There are less number of opportunities, both in terms of academic, professional, sports, extracurricular, everything. So over here in IIT Bombay, there is a plethora of opportunities in all the fields, and the most great thing about being an MBA student in IIT Bombay is that we get to leverage the IIT Bombay ecosystem. We can interact with all the people from IIT Bombay, from all the departments, and we can participate in all sorts of extracurricular activities. And there are so many events that happen throughout the year. So it's basically a very holistic development that we get over there in IIT Bombay. So basically, there are two completely different things that we're comparing here, and it's been great to be at IIT Bombay. Yeah. Great. Congratulations, firstly, this Thank journey. you. And let's talk about why someone should go for MBA, right? If we think like, let's take an example of an engineering student or someone who's doing BBA. तो यार उस पर्सन के लिए एक MBA की क्या वैल्यू हो सकती है? क्या टेक वाले लोग करते हैं, क्या नॉन टेक वाले लोग करते हैं, किस तरीके से एक हम वैल्यू ऐड करते हैं MBA, और कितना प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब हम इसके बाद क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Okay. So MBA
बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद मतलब पीपल गो फॉर एन एमबीए बिकॉज दे वांट बेटर अपॉर्चुनिटीज। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी किसी वर्क है जिन लोगों का, दे वांट टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर पैकेजेस। मतलब आई एम नॉट शुगर कोटिंग एनीथिंग। तो दिस इज द बेसिक थिंग, हायर सैलरीज तो सबको ही चाहिए होती है, तो दैट्स व्हाई दे गो फॉर एन एमबीए। And for freshers, for me personally, why I went for an MBA is that I wanted to complete my education in one go. So I completed my bachelor's first, and then I researched and found that a master's in business administration would be something that I would want to go for. So that's how I went for an MBA, and I wanted to complete my education in one go. Other than that, MBA के साथ बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस हैं। यू गेट टू हैव अ वेरी प्रोफेशनल एजुकेशन। द मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हम लोग वहाँ पढ़ते हैं एमबीए में, दीज आर वेरी प्रोफेशनल एंड they make you ready to serve as a manager directly. So having to get a head start in your career is obviously a great thing. So that's how, and that's why people go for an MBA. मतलब जो मुझे समझ में आया उसके हिसाब से छोटी छोटी चीजें नहीं करनी, सीधा अपनी एक स्टडी करनी है और डायरेक्ट मैनेजर। Exactly. There are two paths to going to the same place. One, you can work for some time and then be a manager. Otherwise, you can simply pursue an MBA and then go for go become a manager. But then also, जैसे हम लोग engineering के time बात करते थे, that having done an engineering from a good college is very important. So same goes for MBA as well. You should aim for the best college in wherever country you want to study. So that is one thing. Okay. So हमने बात किया मैनेजर पोजीशन से रिलेटेड कुछ, है ना? तो यार एमबीए के थ्रू हमारी आगे फील्ड्स किस किस तरीके से डाइवर्ट होती हैं? मैंने तो थोड़ा सुना है कि प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस में, बिजनेस एनालिस्ट। क्या ये सारी की सारी जो मैंने वर्ड्स बोले हैं ये एमबीए के थ्रू होते हैं? क्या हमें अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है? मतलब क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एमबीए कॉलेज में जाने के बाद में? ओके, सो यहाँ पे जो भी अभी आपने टर्म्स बोली वो सब देर आर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज फॉर एन एमबीए ग्रेजुएट, बट देर आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक होती है जनरल मैनेजमेंट, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एंड फर्स्ट ईयर इज ऑब्वियसली कॉमन फॉर ऑल द पीपल. Then in second year, you get to choose electives. So based on your electives, you get opportunities in the corporate world. So say suppose you go for an operations elective, तो आगे जाके operations manager या उस टाइप के jobs आपको ऑफर होंगे. Not necessarily कि आपको वही करना है, but then since आपका डिग्री वो कहती है, आपका सीवी वो कहता है, तो based on that you will get those kinds of jobs. Other than that there are specialized degrees as well. So some colleges give an MBA specialized in marketing, in finance. So वहाँ पे all your electives, all your subjects would be related to marketing and finance, and your degree will say that you have specialized in so and so subjects. So ये दो टाइप की चीजें होती हैं, and based on that you get offers for the roles. Okay. तो ठीक है, ये भी काफी ठीक है, हमें एक इलेक्टिव चूज करने को मिल जाता है, फर्स्ट ईयर तक कॉमन चलती हैं चीजें, उसके बाद में हम अपनी ग्रोथ को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना? राइट. लेकिन यार हम वापस से पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यार ठीक है, हम कॉलेज में आ जाएंगे, अच्छी मतलब आगे बहुत सारी चीजें हैं एमबीए के बाद में जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोफेशनली काफी स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यार एमबीए में जाना मतलब वो जो मेन हर्डल है वो कैसे क्रॉस करना है? मतलब आपकी क्या जर्नी रही थी वहां पर? आपने मतलब किस टाइम पर पढ़ाई शुरू करी, क्या चीजें पढ़नी होती हैं, और क्या मतलब कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, और क्या मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि यार थोड़ा सा आइडिया लग जाए मुझे भी और जो बाकी लोग हैं उन्हें भी। ओके, श्योर. तो लेट्स स्टार्ट विद कि क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें. तो अच्छा, उससे पहले देयर इज अ कैट एग्जाम, common aptitude test, which is for getting into IIMs and a few other colleges. But उसके अलावा भी there are many exams related to MBA. There's ZAT, there's NMAT, and ऐसे बहुत सारे exams रहते हैं जो अलग-अलग colleges अपने लिए conduct करवाते हैं. So not everyone is dependent on CAT. GMAT से भी काफी लोग enter करते हैं MBA में. So these are the few exams that are there. I gave only CAT because my aim was to get into the IIMs or the top IITs or nothing else. Like I would
wait or do something else. Right. So I wanted the best. So I just focused on CAT. And in CAT, there are 3 sections. So one is data interpretation and logical reasoning. Then there is qualitative analysis related to maths and everything. And then there is literature or comprehension related to English, grammar, and everything. So these are the 3 sections. And as for the time that I contributed in preparing for CAT, I would say it depends on the individual. I prepared for 3 months. I joined a coaching center, and for those 3 months, I gave in my 100%. And there are people who, prepare for, say, 9-10 months, and they also might not get into some colleges. So it's very much based on luck. But it also depends on the individual कि आपको कितना time contribute करना है. And the subjects that are there, those are basic, CBSE class 10th वाले सब्जेक्ट्स ही रहते हैं. बट देन द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कैट वो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बट द क्वेश्चंस आर हाई लेवल. सो यू नीड प्रैक्टिस. एंड फॉर दैट I personally feel that solving mock papers is very essential, in cracking any competitive exam such as CAT. So that is one tip I would like to give to everyone who's, willing to go for an MBA. And yeah, I think that answers your question. Anything else left that you wanted to know? In which year exactly, like 4th year or 3rd year, वो कौन सा फेज था, मतलब जब आपने सोचा कि यार ठीक है कैट करना है, मतलब MBA करनी है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और क्या अपनी प्लेसमेंट्स को साइड रखना, उस वाले डिसीजन से यहाँ पर आना, वो मतलब ब्रेन को कैसे मैनेज किया कि यार ये एक चीज को छोड़ना पड़ेगा, एक चीज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, तो उसे कैसे मैनेज करना है यार? क्योंकि लोग है ना, मैं देखता हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चिल कर रहे होते हैं, थर्ड फोर्थ ईयर में आके वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और फिर एंड में सब कुछ मैसअप हो जाता है उनका. तो यहाँ पर अपने ब्रेन को कैसे संभालना है कि यार एक ये काम कर ले बस तू. राइट. तो मेरा भी वही स्टेट था जो अभी आपने डिस्क्राइब किया. 3rd ईयर के बाद आई वाज कंफ्यूज्ड कि मुझे क्या करना है. शुड आई गेट अ जॉब, शुड आई गो फॉर मास्टर्स, एंड मास्टर्स कौन से उसमें. सो आई लुक्ड इनटू MS फ्रॉम अब्रॉड, MBA, MTech, all the options. But what I realized is research is very important. You should identify what your interests, strengths, weaknesses are, and based on that you should research about these fields कि MS अगर आपको करनी है तो किस फील्ड में करनी है, क्यों करनी है. You should find the reason as to why you want to do it. That is very important. ये नहीं कि बस अच्छा वहाँ हायर पैकेज है तो चलो MBA कर लेते हैं, या फिर नहीं MBTech के बाद तो लोग MTech करते हैं तो चलो MTech कर लेते हैं. ऐसा मतलब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. यू शुड आइडेंटिफाई कि आपको क्या करना है, एंड शॉर्ट टर्म मत सोचो. शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म भी सोचो कि लॉन्ग टर्म में will it be beneficial for you, will you be able to continue with it. ऐसा ना होना कि आप MBA कर लो, मैनेजर तो बन जाओ, बट आपको पसंद ही नहीं आ रहा वो काम करना, तो वो चीज नहीं रहनी चाहिए. यू शुड एंजॉय व्हाट यू डू. तो उसके लिए रिसर्च करो, एंड think about what you want to do. Don't panic in your 3rd year or 4th year. Think about what you want to do, and then उसके लिए prepare करो. And बार बार खुद को ये याद दिलाना पड़ता है कि ठीक है यार अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आगे मिल जाएंगे, अभी मेहनत कर लेते हैं. हो सकता है हाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को जॉब मिल गई थी. यू वर वन ऑफ दोज पीपल हु गॉट इन गुड जॉब्स इन सच ग्रेट कंपनीज. सो तब ऐसा लगता है कि यार सब लोग काम कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, घर पे बैठी हूँ, ये पढ़ाई कर रही हूँ तब से. बट लेटर यू विल सी द रिजल्ट. सो जस्ट बी काम एंड कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन. कंप्लीटली एग्री यार. मतलब मैं ये चीज मैंने काफी देखी है. मतलब युक्ति हमेशा ही कॉलेज में पढ़ाई में अच्छी रही है और हर चीज में युक्ति लाइक बेस्ट. ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स में असाइनमेंट्स, क्लास अटेंड करना, सारी चीजें. लेकिन कई बार ऐसे फेजेस होते हैं, मतलब जो डिफिकल्ट चीजें होती है उनमें टाइम लगता है. ठीक है, मतलब गुड थिंग्स टेक्स टाइम, वो वाली चीज. आई फील डायरेक्टली बना था. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें तो यार आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. एक अटेम्प्ट नहीं, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, और जब एंड रिजल्ट मिलता है दैट इज समथिंग कि यार हाँ अब आ गया मजा, अब लाइफ में कुछ हाँ पिछले साल जो किया था अब वो वसूल हो रहा है. तो वो अच्छा लगता है जब यार अपने क्लासमेट्स को, कॉलेज मेट्स को, या जिन्हें भी जानते हैं उन्हें अच्छी पोजीशंस पर देखते हैं, यहाँ पर काम कर रहे होते हैं. एक प्लग इन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर. युक्ति मतलब मेरी क्लासमेट है ऑब्वियसली. शी इज डूइंग MBA as well as she's interning at Nestle, which is a very 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 big company. अगर Nestle का नाम नहीं सुना है तो वीडियो बंद कर दो, ठीक है.
तो इट फील्स रियली नाइस टू सी यार कि हम एक एफर्ट्स करते हैं और एंड में वो रिजल्ट मिलता है ना। कुछ लोग होते हैं कि यार 2 बार 3 अटेम्प्ट में भी नहीं कर पा रहे, कुछ होते हैं जो अपना पूरा एफर्ट्स डालते हैं। जैसे अगर मैं आपका एग्जांपल लूं, यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर 3-4 months and then got into like cleared a good rank, right? Get a good percentile. So it feels nice to see these kind of things, right? और यार next question की तरफ चलते हैं, which is kind of like your suggestions to everyone who is aiming for MBA or any competitive exams, who is in, let's assume there's a guy or girl who is in first, second, third, fourth year of college, and they just wanted to switch to MBA or think of higher studies. What should they do? Like exactly क्या मतलब अभी के लिए एमबीए को टारगेट करते हैं कि यार अगर उन्हें कैट का एग्जाम निकालना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, और आपकी क्या क्या मिस्टेक्स थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? Okay, all right. So I'd say that for engineering के 4 साल में you should invest the first 2 years to identify what your likes and dislikes are, and उसके बाद if you feel that MBA is the option for you, then you should start building your CV. So getting a high percentile is one thing. You will get the call for interview, but then cracking that interview, and there's a written aptitude test in after the interview as well. So उसके लिए भी prepare करना बहुत important है. People only focus for the CAT thing and get a higher percentile, but that will only get you a call to the interview. You have to clear the interview as well, and interview में you have to have a very good CV. They very good in the sense not academically only कि आपके बहुत high grades हैं. You should have a एक complete CV होना चाहिए कि आप co-curricular में भी हो, आपके acads भी अच्छे हैं, you're volunteering at other places as well. So that is something that worked for me as well. So I volunteered in IEEE and DSC, you were the head there. And there were other things that happened in college. I was a part of sports as well. So you should have a complete CV. That helps a lot. That is one thing. Other than that, current affairs is very important. So for the interview, they ask, the range from the range from which they ask the questions, that's like very vast. वो कुछ भी पूछ लेते हैं आपसे. ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, इंडिया के उस शहर में क्या चल रहा है, anything and everything. But that doesn't mean you have to answer everything. That is not the case. But you should know at least जो major चीजें हो रही हैं world में, India में, you should know about it, and you should know about your city as well. So these are small things that happen during the interview. So getting a high percentile is one thing, but you should also focus on clearing the interview as well. So दोनों चीजें साथ साथ करनी चाहिए मेरे हिसाब से. So that is one thing that I found in my peers जो लोग और भी MBA के लिए कर रहे थे prepare, that they didn't focus on the interview part. तो वो उनसे थोड़ा मिस हो गया. एंड फिर यू गेट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम, आपकी हाई परसेंटाइल है तो सारे कॉलेजेस आपको कॉल करेंगे, बट वो इंटरव्यू क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में जाना, दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट थिंग. सो वन शुड फोकस ऑन दैट एज वेल. Cool. So yeah, let's move towards the last question, which is like, how is life at IIT Bombay? Again, a bit of थोड़ा कि यार अब ठीक है, एक माइलस्टोन क्लियर कर लिया, अब 1 साल हो चुका है, वो 1 साल कैसा रहा, और नेस्ले में अब चीजें कैसे चल रही है यार? मतलब जब हम जिस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे, जब उसका एक एक्सपोजर मिलता है उस इंटर्नशिप का, तो वो इंटर्नशिप कैसी चल रही है? हाउ कॉर्पोरेट इज ट्रीटिंग यू एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग एट दिस पॉइंट? Okay, all right. So getting into IIT Bombay was obviously a dream come true for any aspirant who जो भी engineering कर रहा है, उनका obviously goal रहता है IITs crack करना. So I was not able to get into IIT during engineering, but then now when I got the chance to be at IIT Bombay as an MBA student, it was a great experience. It still is. I've completed my first year. I still have 1 year over there. And the campus is like beautiful, and there's a different kind of energy inside the campus. There are so many people, and they're doing so many different things. You get to see all sorts of things on the campus. And talking about IITs, it's like the administration trusts the students. So when I say this, I mean that there is no in time or out time for hostels. The libraries and departments are open 24/7. You can go sit over there, study, and everything is there. The people trust you, and they want you to
be in your comfort zone while you're studying. So it's not like कि नहीं यार यही टाइम है आपके पढ़ने का, इसी टाइम में पढ़ो. तो they are open to everything. अगर आपको रात को टाइम मिला, आप रात को टाइम लेके पढ़ो. So they are supportive in that sense. And otherwise, as I mentioned, plethora of opportunities, be it sports, literature, debate, this, that, anything, you name it and it's there. So that's one thing. So I'll share one small incident related to sports. I'm a very sports enthusiast, and during my engineering, I was not able to, get into sports such as basketball and other things. It was just based on athletics and all. But when I came to IIT Bombay, I played basketball, table tennis, lawn tennis, football, cricket, and any other sport that you can think of, squash, and everything. So one thing was there that there are these opportunities, there are those indoor courts and everything's great. And they also let you leverage those opportunities. ऐसा नहीं कि नहीं करना. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सही रहा वहाँ पर. एंड नेक्स्ट Nestle. So Nestle was another great thing that happened to me. So this is one thing also IIT Bombay provides. Since IIT Bombay has that tag, good companies such as Amazon, Google, Microsoft, Nestle, and all these companies, these are there. And Nestle, one being the biggest FMCG of the world, I was very grateful to be a part of Nestle. And my experience in the corporate world has been good. I mean, I expected something different, that people, would be aloof and won't really talk much, just काम की बात होगी. But ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. वहाँ पे जाके लोग बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, सिखाते हैं. दे आर वेरी पेशेंट एंड दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग. सो दे हेल्प इन दैट सॉर्ट एंड दे गिव यू वर्क, दे हेल्प यू ग्रो. So that is what I have experienced in Nestle as of now, and it's been a good experience for me. Great. Thank you so much, Yukti. Thank you so much for sharing your experiences, preparation tips, your strategies, something about MBA, what we can do after MBA, how to get into MBA, and I guess we have covered all these things. So thank you so much, Yukti, again. Thank you so much for your time, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग पर्सन के साथ, या अमेजिंग सीरीज में, या फिर मतलब हो सकता है मैं ही बोल रहा हूँ सिर्फ. बिल्कुल. थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे एवरीवन. बाय गाइस. आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हमारे चैनल स्पॉन्सर न्यूटन स्कूल की, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है आपके करियर को बूस्ट करने के लिए. अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तब भी, एक बार एक्सप्लोर पर जाके उनके पैक्स देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास 2 कैटेगरीज मिल जाती हैं, फ्रेशर्स के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. फ्रेशर्स के लिए जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो होती है उनकी पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम. यहाँ पर आपको 90% प्लेसमेंट रेट मिलती है. एवरेज पैकेज 9 LPA का होता है और आपको जॉब लगने के बाद में ही पे करना होता है. तो अगर आपने अभी तक न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को एक्सप्लोर नहीं किया, उनके प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने करियर को बूस्ट करिए.